Yeah, please come. Morning. Yeah, please. So Aishwarya Kohli from Ludhiana. Yes. Introduce yourself. My name is Aishwarya and I'm from Ludhiana. I have studied from PCM background and I belong to the everybody in my family is I said, I belong to a family of professionals and my father he is the vice president in Cycles and my sister she's currently working in Amazon. My mother she's a lecturer and I also aspire to become to go into the management field. Father is into what field in Hero? Exports, sir. Okay. So they export cycles? Yes, sir. What are the challenges cycle industry faces from today in India? Are you aware? No, sir. So have a little bit of discussion. And this plant, I think Hero Cycles Ludhiana is Asia's single largest unit to produce maximum cycles in Asia. Number one. Number two, there are challenges which they face from export from China, where the steel prices are cheaper, electricity prices are cheaper. So just brief understanding of the same. Okay, why you want to do this program? So ever since I was little, I have been hearing management issues in my home, and I have wanted to go into the same field. And so this is the right time to pursue it in such a tender age, and I'm also interested to pursue this course. Which specialization in our, we have multiple specialization options. Have you seen our program? So I've seen it, but I have not made my mind yet. Okay, which are the options we give? Yeah, I don't know. So you are not studied it. I saw it, but I don't know. These should be on tips. So see, our percentile is around 86. 86. So we have no option but to get 100 out of 100 in the interview, and we can do this. So if you get 100 out of 100 in the interview, there are many people who are going to give this interview who are not going to join them. Many will join Indore, many will join Shillong, many will join Shahid Sukhdev, many will join SRCC, etc., or nearby DU College, Yes. or other IPM programs. So that is why they are given calls up to 86 for general. Also, there are some flaws in this program, like 4 years. Then it is not a PG IPM. So these things, and it is not a. They don't have a. At present, they don't have a hostel. So they won't be asking the flaws. No, I'm telling you that why even at this percentile you can make a cut. That's what I'm telling you. Okay. Yes, if you don't have any other options like above IIMs, then it becomes a very good options. But if they ask you at the end, very less chance they will ask, because if they were that dynamic, they would have already taken care of those flaws. Unfortunately, it is a mere हिसाब से it is not a very well structured, well thought out program like IIM Shillong. If IIM Shillong is smart, old, seasoned IIM has gone for IPM. 7 more IIMs have gone for IPM. Indore has gone for IPM. These guys have tried to be more they are venturing into BMS. That too 4 years. And in an interview, you have heard the interview of their director for this program. It is there. I'll share it with you. I saw it. I think it is there on their website itself. It's a 1 hour interview. Every student who is not even present here, who wants to give IIM Kozhikode BMS interview, must go through that 1 hour interview of their dean admissions for this program or the program director for this program. The key highlights which I saw was, he said that we will arrange accommodation nearby. That means they will hire some apartments and do it. Secondly, it is at Kochi. It is not in the IIM Kozhikode main campus. So thirdly, the total cost here is roughly estimated to be around 38 lakhs for an undergraduate program. He is saying that the placements are likely to be at par with MBA students. They will try for it. That's a good thing. But even if you get an entry level, say rupees 22 to 25 lakh package at an entry in a company, you will always be seen as a graduate. So you will have to go for a PG later on. So that is a flaw side of it. So when you listen to this video of the director for 1 hour, jot down 10 points which are very important. He's talking about. He's talking about specialization. He's talking about being in IIM environment for 4 years.
He's talking about the curriculum. He's talking about how we will teach you pedagogy. IIM Kozhikode's leverage with the industry they will use for internships etc. तो why this program में बच्चे वो सब आने गए. ये जो आंसर है ना मैनेजमेंट इश्यूज थोड़ा बहुत ठीक है. स्पेशलाइजेशन मतलब ये 99.8% बच्चों ने ऐसा ही आंसर देना. ग्लोबल ज्ञान, जनरल ज्ञान, विच आई टेल. हमने ये नहीं देना, हमने स्पेसिफिक ज्ञान देना विद फिगर्स एंड विद कोटेबल थिंग्स. सर आई हर्ड द इंटरव्यू ऑफ योर dean admission for this program or director for this program, and he has said these things. They make this program unique. जो स्पेशलाइजेशन जो है ऐसे टिप पे होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स है, ये है, मैनेजमेंट है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 3-4 हैं, डाटा साइंसेज है, तो वो अपने टिप्स पे होनी चाहिए. उनका करिकुलम जितना पढ़ सको. वेबसाइट मस्ट बी स्टडीड टोटली. कोची सिटी आल्सो यू शुड नो, जहां आप जाने वाले हो. What is important in it? What is famous in it? Okay, so let us continue. Why this program at present? Introduction is, I'll say 8.5 out of 10. Mother is homemaker. आपने अपने बारे में थोड़ा नहीं बताया. As a person, I like to take up challenges. I want to do something. I want to make my place in the corporate world. Those kind of. आपका family background is good. I come from family of professional. Papa is hero, is vice president in Hero Exports. Mention कर देना. मदर का बोला था होम मेकर है. No, lecturer. Sorry, lecturer. You mentioned that was good. Now after that you come to you as a person, and where do you want to see us? I want to establish myself as a professional in the corporate world. I want to achieve. गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस ये बहुत जल करता है सबके साथ. भले वो पैनलिस्ट फीमेल हो मेल हो, समझते हैं सब. मेल के भी बच्चे होते हैं. दे वांट they will be seeing you as your kids, as their kids. So and they are sitting there to select you. Our goal is to get 100 out of 100, then ऊपर वाले पे छोड़ेंगे. So little bit about about you. That is, as a person, I like to take up challenges. Hello. Yes. I like to take up challenges. Like to take up challenges. So I've played sports also. That. Very good. तो फिर स्पोर्ट्स में कहीं खेला है? बास्केटबॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो फिर वो मेंशन किया ही. बास्केटबॉल, आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन. आई प्ले बास्केटबॉल. आई हैव प्लेड अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल. प्लेड अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये दोनों तीनों चीजें ऐड कर लेना. और फिर आई वांट टू मेक माय मार्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आई वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल एंड टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. दिस प्रोग्राम, फिर इसका थोड़ा सा जिक्र करो. दिस प्रोग्राम आई थिंक इज ए प्रोग्राम व्हिच गिव्स मी एन एंट्री डायरेक्टली इनटू IIM आफ्टर माय ग्रेजुएशन. फिर वो आगे पूछे और क्या ऑप्शन है एक्सेट्रा, वो बात की बात है. इंट्रोडक्शन इस तरह से थोड़ी इंप्रूव करनी. 15 से पहले एक बार और इंटरव्यू देनी. हम कोशिश करेंगे 100 में से 100 लेनी, बाकी ऊपर वाले के ऊपर. वाई दिस प्रोग्राम? तो आप ये सब जो उसकी वीडियो सुन लोगे, सब पढ़ लोगे, तो पॉजिटिव्स रखने हैं अपने पास कि सर आई हैव हर्ड दैट IIM Kozhikode pedagogy will be used in this program. The professors of IIM Kozhikode will be teaching us internships and placements. IIM Kozhikode will be facilitating us for the placements. तो ये 3-4 पॉइंट बोल दिए तो एकदम बढ़िया. एट द बैक ऑफ द हैंड प्लेस. अगर कुछ और ज्यादा ग्रिलिंग करें इस पे करने के चांस कम है. Still, why don't you go for another graduate program? And then you say कि sir, I have heard of your director saying that you would like, they are aiming for placements of this batch students like MBA students, which makes it very a lucrative program. ठीक है, sought after program. Okay. So how is it better than IPM if they ask? Chances are very less that they will ask, because they know, the professors who will be sitting for the interview, they will be knowing that it is not a IPM program. It is a very big drawback. Somebody trying to spend 38 lakhs for this program, and if he has a similar program at 37 or 38 lakhs where he's getting an MBA degree in 5 years, definitely it is a very big cutting edge as compared to this. Here you will, as I told you will have to go for an PG later on to be at par with MBA holders from other colleges. करवा देगा प्लेसमेंट, इक्विवेलेंट टाइप हो जाएगा. इक्विवेलेंट टाइप और इक्विवेलेंट इज अ बिग डिफरेंस. कॉर्पोरेट फिर ये देंगे यार ये पीजी वाले, ये एमबीए वाले, ये यूजी वाले हैं, यूजी के हिसाब से रखो यार, नहीं तो एमबीए वाले अनॉय हो जाएंगे. तो ये सब चीजें उन्होंने शायद फैक्टर नहीं की.
वैसे चांसेस कम है कि आपको ये हाँ पूछेगा बट इफ दे आस्क मी तो मतलब यू कैन ऑलवेज से कि ये स्पेशलाइज्ड है जो कि आई थिंक मतलब इट्स जनरलिस्ट वाला प्रोग्राम होता है कि आपको हर एक चीज का बताएंगे, चार पिलर्स होते हैं, एवरीवन हैज टू डू एवरीथिंग, बट एक स्पेशलाइजेशन इसमें आपको मिल रही है विच इज समथिंग यूनिक। तो आप वो वीडियो देखना, वो स्पेशलाइजेशन देखना and try to understand कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको appealing लग रही है, and then you can say but I my focus is on this only, so which I can program will not give me, this is something extra I'm getting from this BMS program. why do you think you are best suited for this program? So I possess qualities like I can handle and manage people well. I've played sports and it has taught me sportsmanship, and I can manage a team थोड़ा well. वहाँ पे ना क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू ही है, आवाज थोड़ी ऊंची रखना क्योंकि दे विल नॉट मेक एफर्ट। अभी जहाँ पीछे है, इससे 20-30% ऊपर ले जाओ ताकि इससे ना कॉन्फिडेंस एनर्जी सब करनी होता है। अदरवाइज जब हम धीमे धीमे बोलते हैं, आप समझे आपको इस रोल इस प्रोग्राम के बाद इफ यू आर इनटू सेल्स और मार्केटिंग और यू आर मैनेजिंग ऑपरेशंस और यू आर मैनेजिंग ओके लेट्स टेक फाइनेंस आल्सो, फाइनेंस में चलो फिर भी कम बोलने से चल जाए, एचआर एंड यू हैव टू टॉक टू 100 पीपल स्टैंडिंग ऑन द शॉप फ्लोर एज ए एचआर लेडी, तो आपकी आवाज आपके दम होना चाहिए। फिर अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में हो, 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को आपने चार्ज करना है, चार्ज मीन्स मोटिवेट करना है, उनमें एनर्जी डालनी सुबह कि वो जाके शाम को आपका सेल टारगेट अचीव करके लाए। तो these are the things they are looking into you. These are the programs for which you are seeking admission here. Later on, you will do these kind of jobs. तो you need to be strong enough, और वो strength confidence कन्वे होना है आवाज से। अगर आवाज ही ऐसे हो गया कमजोर है कोई, ठीक है ना, size of the body does not matter, inner convictions matter. सचिन तेंदुलकर इज ए क्लासिक एग्जांपल, वेरी स्मॉल गाय, बड़े बड़े बॉलर्स मैकरा खड़ा होता था उसके ऐसे लगता था, बट ही यूज्ड टू बीट देम लाइक एनीथिंग। अंदर की कन्विक्शन इज इम्पोर्टेंट। वो अभी यहाँ डेमोस्ट्रेट कैसे होगी, वॉइस लेवल कॉन्फिडेंस कन्वे करेगा। तो अभी बोलो, व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट सूटेड फॉर दिस प्रोग्राम? So I've been a sports person my life, Right. and also so I possess qualities like sportsmanship, and I can handle a team well. So I also possess other qualities like I can communicate well, and I can understand other people's feelings. So that things can help me. ओके, वन इज स्पोर्ट्स पर्सन, सेकंडली गो गेटर वाला थोड़ा बोलो। आई एम ए गो गेटर, कहीं पे कुछ किया हुआ कोई, मतलब गो गेटर मींस कोई प्रॉब्लम आई, आप उसके ऊपर गिव अप नहीं करते, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, सॉल्व करके ले आते हो। ऐसा कोई एग्जांपल भी याद रखना, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले में भी ऐसा कोई एग्जांपल रखना याद जिसमें आपने आपकी टीम डाउन फील कर रही थी, हारने वाले थे, एंड देन यू मोटिवेटेड देम अप, एंड हाउ यू turned a negative situation into a positive one. एग्जांपल याद रखना। ओके, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ्स काफी हद तक आ गई हैं, बोलो फिर भी देखते हैं जरा। These are the points which I say कि 10 reasons you should know why you should get selected. बताओ स्ट्रेंथ्स, नहीं सोची अभी तक? सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। 5 रखो, उनमें से प्रायोरिटाइज मैं कर दूंगा, और टॉप वाली हम बोलेंगे वहां। वीकनेसेस ये भी नहीं सोची है, सोचती हूँ। सोच लेना, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में विल फाइंड। Where do you see yourself 10 years on? I see myself working as a professional in one of the top MNCs. Okay, which line, which domain? So I have not made up my mind about it. कुछ आइडिया तो होगा। आप एमबीए की एक आईएम के कॉलेज की इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो, अगर आप ऐसा आंसर दोगे वीक आंसर माना जाएगा। आई हैव ए ब्रॉड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, एचआर के बारे में पता है, फाइनेंस के बारे में पता है, मार्केटिंग के बारे में पता है, ऑपरेशंस के बारे में पता है, किस तरफ इंक्लिनेशन है सब में से आज के दिन में? इंक्लिनेशन तो मुझे नहीं पता अभी तक किसमें। तो इनका सब सुन लो, मेरी एक वीडियो है मैंने डाली हुई है डिसीजन मेकिंग, उस क्लास 2 आवर्स की क्लास है, उसमें सारे डोमेन्स, क्या एचआर का फंक्शन है, एचआर हेड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, और इसके आगे सब एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो सारी सुन लो। इट विल बी जस्ट 2 आवर्स, आप उसको 1.5 की स्पीड पे चला सकते हो, क्लास में ली हुई क्लास है। देन यू विल कम टू नो which what color is your parachute, means where do you want to be, a broad understanding.
ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेशलाइजेशन भी है प्रोग्राम में, तो यू शुड नो कि कौन सा वी वांट टू बी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कह रहे हैं कि हमने जाना है तो कुछ तो क्लैरिटी हो, जाना कितनी लाइन से, वो लान से लान कर चलना नहीं, हम ये नहीं कह सकते अभी। देखिए ये लोग जो हैं, एक और दिमाग में रखो, ये पब्लिक जो आपके इंटरव्यू लेगी, इनको 20 years का इंटरव्यू लेने का तजुर्बा है एमबीए के स्टूडेंट्स का। वो जितनी मर्जी अपनी एक्सपेक्टेशन डाउन कर दें, 70-80% वो आपसे उसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, उसी तरह से आपको वैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे जैसे वो एमबीए वालों को करते हैं, क्योंकि दैट इज देयर style of interviewing. This is my reading of their mind. The professors who will be interviewing you, they have been interviewing our MBA cats, MBA students for 20 years plus. So 80% questions or 80% the way they will look at you will be similar. 20 will be different. They will give you some easy questions, very general questions because you are +2 pass out. But they will like to have your vision clarity. They will like to have your, और उसमें उन्होंने लिखा भी है कि हम क्या क्या डोमेन्स पे चेक करेंगे साइट पे, उसमें लिखा है करंट अफेयर इज वन। which latest news you have followed? So the president of Thailand was suspended. Their call. Okay. India related. I can't recall. कल नहीं पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया, 2-3 बार नहीं पढ़ी ना? अभी से पढ़नी शुरू कर दी। बहुत बुरा हाल है। कहना मेंटर का टीचर का नहीं मानना, फिर टीचर नाराज ही होगा जब उसे दिखेगा कि मेरे बच्चे मेरा कहना ना मान रहे हैं, और उन्हीं उसी कहने को मान के हमारे कितने बच्चे आए कोझिकोड में गए। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 to 5 times सर्फ, TOI, ET, इकोनॉमिक टाइम्स, बस इतने, और ट्रिब्यून फॉर लोकल फ्लेवर। 4 to 5 टाइम्स, एंड शाम को 9 to 10 PM, एक ही घंटा प्राइम टाइम न्यूज सुन लो। वो लोग क्या करते हैं, बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू लेनी है, हम लोग गए थे इंटरव्यू में ताज हुसैन के लिए, IIM इंदौर, वहीं पे ब्रेकफास्ट चल रहा है, टीवी चल रहा है, वो देख रहे हैं न्यूज क्या चल रही है। शाम को बैठे घर में खाना खा रहे हैं, रूम में बैठे टीवी न्यूज सुनता है आमतौर पे। इंटेलेक्चुअली प्रोफेसर टीचर मेरे जैसा बंदा 80% न्यूज ही देखता है जब वो टीवी देखता है। तो वो जो देख रहा है उसी के हिसाब से वो माइंड में आएगा, उसके वो कुछ पूछेगा, फिर हम नहीं आंसर देंगे, कैसे होगा? प्राइम टाइम में यू कैन स्टार्ट विद इंडिया टुडे, देन फॉर प्रो गवर्नमेंट यू कैन गो टू रिपब्लिक, एंड देन टाइम्स नाउ, bit of neutral kind of. These two are bit of neutral kind. ये भी pro government है, ये totally government है। पहले NDTV anti government होता था, अब NDTV रहा नहीं। NDTV is now bought by Adani. Since then it has lost, it has not been overcritical of the government. So news follow ना करके काम चलना नहीं है, तो अगली इंटरव्यू में मुझे फट 2-3 न्यूज आनी चाहिए। ओके, President of India. Draupadi Murmu. Who was the president before him, before her? Ramnath Kovind. Very good. Draupadi Murmu comes from which state? Andaman. शायद झारखंड है। She is a tribal lady. So that I know, but कोई बात नहीं। So लास्ट वाला ही बता दिया। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस अभी निर्मला सीतारमन है, पहले था जेटली। रोड्स वाला तो सेम ही चल रहा है। रेलवेज पहले कौन था, अभी कौन है? टेलीकॉम। मेन मिनिस्ट्रीज, अच्छा पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नहीं देखो ना, चीमा है, हरप्रीत चीमा। अपनी स्टेट का थोड़ा बहुत पूछ सकता है। What is Ludhiana famous for? Ludhiana is famous for its textile industry and cycle industry. What is happening in Ludhiana and Punjab these days? So in terms of what? ये नहीं, आपको ऐसे बोल दिया तो बाउंड्री लेस है, आपके पास है। Think on your feet. You have, if they ask you generally like this, you can take anything. You can even start with rains. Whole of north is experiencing lot of cloud bursts. अब न्यूज में वही देख रहे हो, lot of cloud bursts, lot of excessive rains, and the water is also coming
in the field. So there is orange alert in some areas of Ludhiana due to the rivers can achieve flooding. Number one. Number two, airport. Airport is about to get commissioned. Railway station upgradation, positive. Railway station upgradation. Jammu Katra, Jammu Delhi highway work under progress. So all these three, if they succeed, it will bring lot of prosperity and a lot of avenues for Ludhiana to grow. Role model नहीं है कोई. सोचा नहीं है. तो मिसेस पेक्टर को बना लो, उनकी स्टोरी सुन लो. लुधियाना से है ना, क्रेमिका की हेड है. Started with a very small investment. Today the group is thousands of crore. Famous industries from Ludhiana, industrialists from Ludhiana. नहीं पता. इंडस्ट्रीज ही याद कर लो. हीरो आपके पापा, बच्चा ऐसे बोला आंसर दोगे मेरा दिल करेगा दो लगाऊं. हीरो में पापा जॉब करते हैं, मुंजाज नहीं आते दिमाग में. ऐसे नहीं करना राजे, वहां मुश्किल हो जाएगी. हीरो में पापा जॉब करते फिर भी अपन ना बताएं मुंजाज. पहला ही दिस इज लाइट क्राइम. स्ट्रीट स्मार्ट बनो थोड़े से. भोले वाला को नहीं करना उन्होंने सिलेक्ट. थोड़ा चुस्ती चलाकी चाहिए. ठीक है. सुबह मेडिटेशन शुरू कर दो आधा घंटा, उससे माइंड शार्प होएगा और फास्ट चलेगा. रनिंग कर सकते हो सुबह, कुछ स्वेटिंग कर सकते हो, करो. फेमस इंडस्ट्री हीरो ग्रुप के मुंजाज हैं, या तो पापा ही जॉब करते हैं. फिर आगे आपके ट्राइडेंट, सुना कि नहीं नाम ट्राइडेंट का? आरजी राजेंद्र गुप्ता. देन वर्धमान, वर्धमान ग्रुप ओसवाल्स. बस तीन ही बता दिए, बहुत है. और अभी ये बता के था हूँ, प्रेमिका, मिसेस पेक्टर. मैथ के गुरु. So what is your favorite topic in maths? वैसे favorite subject क्या है if I ask you? Chemistry. Okay. अब मतलब since I am from commerce background but मेरा maths था, तो I will ask maths. So what is your favorite topic in maths? Differentiation. Okay. So आपको मैं पेपर देता हूँ. Can you draw me the graph for mod x? And at what point is it non-differentiable? It is differentiable for all points. नहीं, हाँ, it is differentiable for all points. What is the differentiation for mod x? What is dy dx of mod x? It is mod x only. The derivative of mod x. What is the derivative? What does derivative mean? It is the slope, right? हाँ. 1. But what will it be if x is less than 0? It will be minus 1. Slope. So it is not defined at 0. Yes. And is it continuous at all points? No, it is not continuous at 0. Okay. Why is it not? Why is it discontinuous at 0? Because anything that is not differentiable, it is not continuous. It is other way around. It is anything which is not continuous is not differentiable. No, anything that is not continuous may. Anything. This is a continuous function. But it is not differentiable. So anything which is non-continuous is non-differentiable, not the other way around. Right? Can you give me example of any discontinuous function? Greatest integer function. Can you draw the graph? Fine. And what does double derivative mean? Differentiating something 2 times. Okay, and what does it signify? What does it represent? Like if we double differentiate distance upon time, then it gives acceleration. Double differentiation. Okay, fine. And can you give me the graph for tan x?
Mm, I'm not sure about. Okay, sin x. तो इसमें देखो दो तीन चीजें हैं. फर्स्टली आपका जो ये वाला ग्राफ है दैट इज फाइन. बट अगर आप कोई भी ग्राफ बना रहे हो तो फर्स्ट आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेवल करना है, ओरिजिन लेवल करना है, एरोज लगाने हैं सारे. ठीक है. एनी ग्राफ दे में आस्क यू टू मेक, या जो भी अगर आपको कुछ भी डायग्राम या कोई भी चीज आपको बनाने बोल रहे हो उसकी लेबलिंग टॉप नॉच होनी चाहिए. ठीक है. अब जैसे आपका एक क्वेश्चन था डेरिवेटिव्स का, तो ये अगर आप मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हो तो ये यहाँ पे नॉन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है जीरो पे. तो यहाँ पे आपको ये सर्कल बनाना होगा टू शो दैट दिस इज फंक्शन विच इज नॉट, जिसका डेरिवेटिव नहीं है एट जीरो. और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसकी स्लोप -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे इसकी स्लोप अनडिफाइंड है. Hmm. डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप होती है. एंड एक रूल ऑफ थंब है कि अगर कोई भी फंक्शन आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो कंटिन्यूस है. Hmm. जहाँ पेन उठ रहा है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया. जैसे आपने ये बिल्कुल सही बनाया और यहाँ पे सर्कल्स भी डाल दिए. यहीं से आप हर ग्राफ में ये एरोज रहेंगे, यहाँ पे ओरिजिन रहेगा. मतलब अगर ये स्टेप फंक्शन है तो स्टेप फंक्शन का आपको 1 2 3 भी दिखाना आप भी पड़ेगा सुनते कि रहे. कौन से स्टेप पे ये हो रहा है. Hmm. ठीक है. tan x का ग्राफ स्नेक ग्राफ होता है ये. ठीक है. ये मतलब अगर आपका ये फेवरेट टॉपिक है, मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक, Favorite. अच्छा दिमाग में वही आया मेरे. हाँ दैट इज फाइन, कोई बात नहीं. पर ये है कि अगर आप डेरिवेटिव बोल रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्राफ्स. क्योंकि पहला थॉट वही आता है चलो इनसे ग्राफ बना के दिखाते हैं कि ये डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस, नॉन कॉन्टिन्यूअस. Hmm. और ये याद रखना है कि जो भी कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई गारंटी नहीं है. पर जो डिफरेंशिएबल है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है. अगर आपको कोई और टॉपिक पिक करना है तो मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू में आप सोच के आना. ठीक है. मैं मैथ से पूछूंगा आपसे, बट उसका टॉपिक जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आपको लगता है वो आपको तो मैं मतलब you should know. फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ सकते हैं. हाँ बिल्कुल definitely. You are aware about standard deviation, Standard. statistics. What is standard deviation and what does it signify? So standard deviation, when a set of numbers, we calculate the mean and then we calculate the difference and each values standard deviation from that mean. So what does it signify? Standard deviation. And In one word. the average. मैं तो explain कर रहा हूँ how it is calculated. It signifies variance. पढ़ लेना इस चीज को, ये उनका फेवरेट है. 80-90% interviews में they will ask about standard deviation. And what does it signify? Some of the interviews they will ask you, there is a formula divided by n minus 1. X double bar minus xn raised to the power square and then divided by n minus 1 and then under root. या ऊपर का अंडर रूट होता है ना, ऊपर का अंडर रूट. व्हाई इट इज अंडर रूटेड? ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन. आर यू अवेयर व्हाई इट इज स्क्वायर्ड एंड देन अंडर रूटेड? अब x double bar mean can be here. There are some readings which will be lower, some may be higher. So to nullify the negative effect, they for each reading n तक, जैसे 100 है अगर, 100 में कुछ माइनस में आ जाएंगे. अगर ये x double bar 100 है, here it will be 101. So x double bar 100 minus 101 will be -1. So the point is it wants to signify the variance in the process. So it will, if it is not nullifying the negative effect, it will reflect wrong. And n minus 1 is 100 है. n minus 1 का फंडा पता है? नहीं पता. n is a sample taken, say 100. Now based on this we want to have a estimate for the whole loss of population. We have taken a sample of 100. Based on this 100 we want to propagate the variance for the whole process, whole population, 10,000 items or 1,000 items. तो उसमें इसलिए कि वो ज्यादा आई वेरिएंस रिफ्लेक्ट हो, n-1 99% एक्यूरेसी के साथ ये प्रेडिक्ट करता है. इसलिए इसको करा जाता है n-1. कि थोड़ा डिनोमिनेटर जब थोड़ा छोटा होगा तो वेरिएंस थोड़ा ज्यादा आएगा.
क्योंकि this small lot is representing the whole population. That's the reason. स्टैटिस्टिक्स उन्होंने पढ़ाना भी है और यूज भी होता है, तो स्टैटिस्टिक्स को रिवाइज कर लेते ये भी पूछ सकते हैं जब आपने कहा कि नेगेटिव इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, हाँ। तो वो तो मॉड फंक्शन भी करता है, तो वो स्क्वायर लेके रूट क्यों लेना है, ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी नॉट डूइंग सिंपल हैं n प्लस वाले में। हाँ, तो वो क्यों करते हैं हम, वो ये उसका आंसर यहाँ पे है कि इट्स अ मच क्लीनर कैलकुलेशन, जो आपका एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन पे आप फर्दर एनालिसिस जब भी आप करोगे, अगर आप उस डेटा सेट को आगे यूज कर रहे हो फॉर एनी, यू वुड वांट, देयर इज अ सिंपलर सॉल्यूशन कि आपने स्क्वायर कर लिया उन आइटम्स को और बाद में आपने उसका रूट ले लिया जो उनका समेशन है। अगर आप मॉड में खेल रहे हो तो फिर उसके रेट ऑफ चेंज जब आप निकालोगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स विद द डेटा। जितना आपका हो सकता है यू डील विद कंटिन्यूअस फंक्शन, यू डील विद डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसीलिए उसको प्रेफर नहीं करते। मीन मोड मीडियन 90% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर व्हाट काइंड ऑफ डाटा, इसको पढ़ लेना थोड़ा। स्टैटिस्टिक्स वाले एरिया सारे रिवाइज करके जाना, हाउ वेयर मीन इज मोर relevant, where mode is more relevant, where median is more relevant, what kind of observations. Then I have written down two more things. Extracurricular activities. What are your extracurricular activities? So hobbies. Extracurricular is above, other than hobbies, which you do other than study, like MUN, if you have participated, declamation contest. Extempore, extempore. हाँ, extempore अगर आपने किया कहीं participate, तो वो स्कूल को रिप्रेजेंट किया, वो बोलने का। फिर कोई MUN हेड गर्ल या प्रीफेक्ट, हाँ तो प्रीफेक्ट वो यहाँ बोलना है, तो वो इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में लाना है, दैट विल डेमोन्स्ट्रेट योर लीडरशिप कैपेबिलिटी। सो स्कूल प्रीफेक्ट एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन में जाते हैं, MUN में नहीं गए कभी तो छोड़ो MUN, तो इस तरह की एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर में अदर देन स्टडी। और फिर फेमस स्टार्टअप्स देख लेना थोड़े से, और उनमें क्या प्लस है क्या माइनसेस है। स्टार्टअप्स में पीछे जो ट्रेंड चल रहा था बर्निंग का, यू नो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ बर्निंग, मींस नेगेटिव losses for 5-6 years, but still the companies get valuated very heavily and they are sold out at say rupee 5,000 crore etc. The company is still not making profit. How they would be, how they are getting evaluated and sold at 5,000? They were like, I would like to understand your business mind for this. Think and tell me. So the more they're selling, the more they're burning. It could be. My So question is, try to understand the question first. Question is, I am saying there is a burning concept in startups culture in India. Companies in 6th year, 7th year also they are burning cash. They are into losses. Still they get evaluated at 5,000 plus crore and the promoters get 5,000 crore and they get out of it. How it would be happening? So it could be, they could be showing the future projects. Yes, excellent. Good, Shravan. Very good, Shravan. The prospects, the footfall, the number of clientage, the number of people on their platform, they show that to the investors कि हमारे पास देखो जी 10 मिलियन 1 करोड़ का कस्टमर बेस है, आज भले हम लॉस में, आप इस कस्टमर बेस को 100 और चीजें नहीं बेच सकते। इसी कंसेप्ट हम नहीं कर सकते, हमारे पास मनी का कंस्ट्रेंट है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, वेयर हाउस का, बट दिस मच क्लाइंटेज if we have, so then you can do a lot of new things. Plus if you increase scale in with these kind of customers itself, the profitability will come, the projected future forecast के basis पे वो उनकी valuations strong मिल जाती है। ठीक है, एंड में पूछ सकता है anything you want to ask from us? No, so your answer can be, sir, I think most of the things are clear from your website. And if there is anything, when you read their website totally, they listen to the directors' queries, their interview of 1 hour. फिर भी अगर कुछ रह जाएगा दिमाग में वो पूछ लेना। एक स्मार्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, सर फॉर दिस 4-year program, are there any banks inside the campus who will facilitate the loan for us? That can be a smart question.
if it is not available on their Kochi campus website or any of the FAQs etc. जैसे आई एम इंदौर में अंदर ही बैंक है एसबीआई का और पीएनबी इंदौर वाले का टाई अप है तो दैट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अगर आपके माइंड में है वो पूछ सकते हो सर आई served from your side but I could not see any sports facilities so are there any and etc. Third, एक और smart question हो सकता है in this program of 4 years will we get some chance and some classes and some interaction with the IIM Kozhikode main campus. That can be very smart and intelligent question. Sir, I've seen this program will be held from Kochi campus. So whenever there are big events in the main campus, like fest, college fest, or visiting guest lecture of a very big important celebrity, important business leaders, will we be getting a chance to participate in that? Number one. Number two, आपको खुद ही पता होना चाहिए IIM कोझिकोड से उसका डिस्टेंस कितना है कैंपस है और इसका कोची का और कोची के आसपास ये कह रहे हैं कि आईटी हब में है IIM कोझिकोड का जो ये कैंपस है ये आईटी हब में है तो इसमें आई थिंक मैंने पूरा डिटेल में नहीं देखा शायद ये कॉर्पोरेट के और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह पे ज्यादा फोकस है इस कैंपस का अदरवाइज IIM कोझिकोड में सब चलता है तो ये सब दिमाग में रखना एनीथिंग यू वांट एनीवन एंड कई बार ये पूछ लेते हैं एनीथिंग यू वांट टू शेयर दैट इज नॉट मेंशन्ड और डिस्कस्ड हियर So I wanted to share about the startup that my father started in my name. So he was saying that I can show you the document. What is that? So can No, I show you the? explain. I have not understood the concept very well till now. So don't tell me that. So I'll be It is learning. started in your name. That doesn't mean if you are not into it, if you don't know about it, don't mention. Okay. आप यही कहोगे लास्ट में कि सर आई थिंक this program resonates very well with my personality. I think it will be a good opportunity for me to be in this program. मतलब अपनी सैलरी कर सकते हो इनमें फिर से तो यहाँ enthusiasm दिखा सकते हो it will be a great step forward in my career. So only these things I think I have not yet, if they are not yet discussed. Sir, I think this program fascinates me a lot and I'm quite enthusiastic about it. ऐसा कर सकते हो ठीक है चलो गॉड ब्लेस अब आज है कितनी तारीख थर्ड है तो आप 7 दिन 10th को फिर से टाइम लेके इंटरव्यू देंगे स्टॉप कर दो